क्या टिकटॉक आपको इरिटेट करता है या टिकटॉक आपका डेली डोज है? क्या है ये टिकटॉक और सही मायनों में टिकटॉक आपको सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं? लेट्स डाइव इनटू दिस। Hey guys, welcome back to another episode of this Hustle podcast, and this is podcast number 4, and I'm talking about TikTok. Seriously, I'm talking about TikTok. Before diving into what I'm really talking about TikTok, let me introduce myself. I'm Tushar के Pahari और आप मुझे सुन सकते हैं Spotify, Google Podcast और Anchor पे. Apart from that, you're actually listening to YouTube's podcast. So YouTube में कोई podcast का कोई अलग से चैनल नहीं होता. So I have exported this file into a audio file. So please आप अपने headphones leads वगैरह लगा लीजिए so you can listen to this very carefully और कोई disturbance ना हो. So moving on to the podcast series, this is episode number 4 and I'm talking about TikTok. So seriously, what is TikTok? And as I was saying, क्या ये really आपको irritate करता है या फिर ये आपका daily dose है? फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर डूइंग इट एवरी डे. कुछ लोग हैं जो इसे रोज़ यूज़ करते हैं और बहुत डेली कंटेंट पोस्ट करते हैं. और क्या सही मायनों में आपको सीरियसली लेना चाहिए टिकटॉक को? अपार्ट फ्रॉम ऑल द फैन फ्रेजी अराउंड टिकटॉक एंड पीपल अराउंड टिकटॉक, मोस्टली टीनेजर्स आर यूजिंग इट एज ऑफ नाउ. और अब आना स्टार्ट हो गए हैं कि कुछ सीरियस कंटेंट क्रिएटर्स भी टिकटॉक पे आ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग कि एक्चुअली टिकटॉक है क्या. सो what I see, TikTok is an short video post करने का एक प्लेटफॉर्म है सिंपल सा. राइट नाउ यू आर ऑन यूट्यूब और अब जैसे आप यूट्यूब को देखते हो सो इट्स एन ब्रेड बटर फॉर एवरीवन. रोज़ ही आप यूट्यूब को यूज़ करते हो फुल्ली. बड़ी बड़ी वीडियोस होती हैं 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स. सो वीडियो का कंटेंट जो होता है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है. ऑब्वियसली सब 1 मिनट का भी डालते हैं 2 मिनट का भी डालते हैं, बट टिकटॉक इज़ रियली just focusing on 1 minute videos. So it's just a video platform where you can post 1 minute videos or rather shorter than that. And this is really something that is taking peak right now, because what it's there is ki even Mark Zuckerberg, who is the founder of Facebook, is saying ki yes, they've been left behind by TikTok in some numbers, and those numbers are really important as far as consumer point or user point of view is concerned. So the point is कि TikTok अब लोगों को इरिटेट भी करता है और obviously there are other section of the people who use it very often, every day, every moment, and they're producing content on it every day. So rather I would say it's kind of a मिडिल ग्राउंड जहाँ हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस पे अब आना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी हैं. सो व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि इट्स बिन really an important app for someone who is living in tier 2 and tier 3 cities. For example, if you get out of Delhi, get out of Mumbai, get out of Kolkata or big cities like Bengaluru, then it's like everyone has TikTok. So it's kind of a app where people are not that much serious. आप YouTube पे serious content डालते हैं, but obviously TikTok पे आप dub smash डालते हैं. So what happens कि you do a act for 30 seconds or a minute and then you put a song behind it. So inbuilt feature होता है TikTok में जहाँ पे आप song लगा सकते हैं या फिर कोई dub. So dub आजकल बहुत चलता है. So I think the first thing has been already answered. So what is TikTok? Now you know what TikTok is. So the next question comes कि is TikTok really making a dent now? Because as I mentioned earlier, even Mark Zuckerberg was saying that they are left behind in certain sort of numbers, that TikTok is really taking over the world. So what happened, मैं इसको थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि really what happened, कि TikTok कहाँ से है and what is this thing. So how it actually came into existence, यहाँ तक कैसे पहुँचा. So there was Musically, another similar sort of platform that was launched in America, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, जहाँ पे पूरा स्टार्टअप कल्चर अपना
सबसे पहले बूम हो रहा है और सबसे जहाँ से स्टार्ट हो ही रहा है एक तरीके से. So at that point, Musically was 1 year old, and it has some kind of momentum with it. And then a Chinese giant company, a unicorn company that was ByteDance, who actually garnered $1 billion to buy it. So that was the first step when Musically was bought for $1 billion by ByteDance. That's a unicorn company in China, and Musically was just an similar sort of app that was in America. So बाइट डांस का ये एक्विजिशन फॉर $1 बिलियन, मैं बता दूँ $1 बिलियन में लिटरली 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए होते हैं. सो आई डोंट नो व्हाट द एक्सचेंज रेट इज अबाउट, विल नॉट गेट इनटू दैट नंबर्स एट दिस मोमेंट, बट $1 बिलियन इज़ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी एट दिस मोमेंट. सो एक ऐप जिस पे लोग लिटरली टीनेजर्स, ज़्यादातर 80% ऑफ द यूजर्स वर टीनेजर्स एंड मोस्ट ऑफ देम वर गर्ल्स, वर डूइंग टब स्मैश and putting some funny content out, was sold for $1 billion. And then ByteDance renamed that app into TikTok. So what is Musically? It's generally TikTok right now. Then TikTok को launch किया उन्होंने चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में, and then India में. So it's been around for around 3 years or so. So TikTok has been there for 3 years and it has massively gained momentum. That's one of the things. So अगर आप ऐप स्टोर पे जाएंगे और ऐप स्टोर का डेटा देखेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट गूगल ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, दैट इज़ जनरली एंड्रॉयड फ़ोन्स में जो होता है, नॉट ऑन iOS. प्रोबेबली iOS में भी जाएंगे तो देयर इज अ डेटा दैट सेज कि टिकटॉक हैज़ बीन डाउनलोडेड certainly more number of times than combined Facebook's apps, Messenger app, and even WhatsApp at this stage, or even Instagram. So everything is kind of dying in sort of momentum, and TikTok has gained that much कि सबसे ऊपर अभी TikTok ही चल रहा है. So the amount of number of times it has been downloaded in India, in Southeast Asia, in China, and all over the world is really, really massive, and it's bigger than the numbers of Facebook, Messenger, and sort of apps combined, even in Instagram. So is it really making a dent? Obviously, with the amount of downloads it had, with the amount of people actually hopping onto this platform, it is really making a dent now. And how much is true that TikTok will really make a dent afterwards from this point? Okay, numbers are there कि लोग अब डाउनलोड कर रहे हैं और ये ऐप अब हर फ़ोन में है ऑलमोस्ट, मतलब मान के चलो 70 to 60% ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी डाउनलोडेड द टिकटॉक ऐप. सो दे आर एक्चुअली कंज्यूमिंग दैट कंटेंट कि वो देखते हैं वो 30 सेकंड्स वीडियो, 60 सेकंड्स वीडियो जो चलती रहती है. और सम सॉर्ट ऑफ द वे टिकटॉक हैज़ बीन बिल्ड कि आपको किसी को फॉलो भी नहीं करना पड़ता, उससे पहले अगर आप मेन स्क्रीन पे जाते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ वीडियोज़ दैट यू कैन स्वाइप अप एंड स्वाइप डाउन to see what's around you, rather I would say कि जो भी वीडियो ऊपर चल रही होती है, थोड़ी बहुत व्यूज़ उसमें ज़्यादा हो रहे होते हैं, देन वो अपने आप ही आपकी फीड में आ जाता है. सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स टिकटॉक इज़ गेनिंग इन सर्च कि अगर आप कोई भी चीज़ ढूंढने जाते हो तो आप अगर वीडियो पोस्ट करते हो टिकटॉक पे तो उस पर व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है. अगर आप कंसिस्टेंटली 10 days 20 days अपने कंटेंट को पोस्ट करते हो ऑन टिकटॉक एंड यू डू द सेम थिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड यू डू द सेम थिंग ऑन फेसबुक और यू डू द सेम थिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, टिकटॉक्स gaining much more than that, than any other platform. So if I set an example of this thing, you posted say 10 videos on each of this platform, so the number of views on TikTok will be double than what people are viewing on Instagram and LinkedIn or Facebook combined. So at that point, like TikTok is on that stage that was Facebook on 2010 or LinkedIn a few years ago or a year ago or 6 months ago. So at this moment जो attention है वो TikTok पे ही है. So does it really translates into some sort of revenue? Well, for the first 2-3 years the revenue was very less, probably in $1 million,
and obviously for something for TikTok which was bought for $1 billion has just revenue of millions is a serious graveyard question here. But for the last year, the data अभी आया है जो, the revenue of the TikTok app is $7 billion, straight from few $1 million to straight $7 billion. That's really massive, and I think this is a real testing time where things will change for TikTok. So how you can use it, that's one of the questions that comes into mind now, because obviously now TikTok is making the dent, we know it's making revenue, एंड मार्केटर से लेके नॉर्मल क्रिएटर अब टिकटॉक पे आना स्टार्ट होंगे. सो हाउ यू कैन यूज़ इट, व्हाट आई सी एज, मैंने भी अभी एक टिकटॉक अपनी प्रोफाइल बनाई, यू कैन फॉलो इट ऑन द सेम नेम तुषार के पहाड़ी, अगर आप डालोगे तो आ जाएगा. सो अभी मैं डालना स्टार्ट ही करूँगा. आई जस्ट वांट टू टेस्ट इट अराउंड हाउ इट इज़ गेनिंग मोमेंटम इन इवन फीड्स टर्म्स, कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, एंड हाउ आई कैन रियली ट्रांसलेट इट टू समथिंग दैट profits me or adds value to my portfolio of things. So what I saw, TikTok came up with a EduTalk program, EduTalk. So now they're actually putting creators above, एंड उन्होंने एक प्लान लाए हैं जिसमें वो एडुटॉक कहते हैं. एडुटॉक मैंने देखा और पढ़ा कि एक्चुअली है क्या. सो ये सबको ही मैसेज आया होगा जो लोग टिकटॉक यूज़ करें उनके नोटिफिकेशन सेक्शन में, कि एडुटॉक एक प्रोग्राम है जहाँ पे आप ज्वाइन करके अगर आपके 5000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कौन से हैंडल पे हैं, लिंक्डइन पे है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है या फिर फेसबुक पे है. तो जब आप ये देंगे और उसके बाद उसमें एक कैटेगरी चूज़ करेंगे कि वेदर आप एंटरप्रेन्योरशिप पे वीडियोस बनाना चाहते हैं, फ़नी कंटेंट बनाना चाहते हैं, कॉमेडी कंटेंट बनाना चाहते हैं, ब्यूटी टिप्स एंड एजुकेशनल पर्पसेस, तो आप कोई सा भी सेक्शन चूज़ करने के बाद उसमें जा सकते हो एंड देन अप्लाई कर सकते हो. और वो डायरेक्ट आपको एक वेरीफाइड पेज देंगे आपका, जहाँ से आप कंटेंट पब्लिश कर सकते हो, और उसके अगले ही डे से आप जो भी कंटेंट पब्लिश करें वो मोनेटाइज होगा. सो दिस इज़ रियली अ बिग स्टेप फॉर टिकटॉक टू कम अप विद, बिकॉज एडुटॉक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे आप लिटरली इतने सारे यूजर्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं एंड दे कैन मेक अ डेंट नाउ इनटू दिस यूनिवर्स, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मोनेटाइजेशन विल टर्न इनटू, आई डोंट नो हाउ मच बग्स इट विल टर्न इनटू, बट एडुटेक एक प्रोग्राम है जो रियली अब देखने लायक होगा कि हाउ टिकटॉक विल इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ क्रिएटर्स विल एक्चुअली रियली मेक आउट दिस समथिंग. सो इसके बाद आते हैं मोनेटाइजेशन के क्वेश्चंस, कि ऑब्वियसली अब आप टिकटॉक पे आ गए एंड यू आर मेकिंग a lot of videos and you have joined this edtech program or anything that is related to monetization program. Next thing that really comes up कि okay, there was YouTube, उसमें मोनेटाइजेशन का बिल्कुल ही डिफरेंट सेट ऑफ rules and regulations था. Now how TikTok will do it, because there are some sort of confusion that creator will actually see, because सबको आ जाता है YouTube की, and we all know YouTube is all about 5 to 10 15 minutes of video content. Now the first or the last issue भी वही माना जाएगा कि when you have a platform where the most or the maximum length of video that can be published is just 1 minute, how can you really convert that into money? I don't know, probably TikTok will answer this in some time in future, probably in 6 months or 1 year, when जब creators आएंगे और इस platform को join करने के बाद actually में देखेंगे कि how it really converts. But TikTok has the answers for this, कि how 1 minute videos can translate into something for creators at the end. So it has been a fun debate around TikTok for a long now, 6 months or a year. सब लोग TikTok पे debate कर ही रहे हैं whether it is good for their child, whether it is really good. There is case in India also happening. Indian government ने भी और High Court ने भी कई बार इस पर बैन लगाया है due to circulation of some pornography things around it. बट आफ्टर टिकटॉक अश्योर्ड इट कि वो इन चीज़ों को बैन करेंगे और फिल्टर करके ही कंटेंट डलवाएंगे. देन अगेन टिकटॉक दोबारा स्टार्ट हो गया था, बीच में काफ़ी लोग खुश भी हुए थे. ऑब्वियसली द हेटर्स विल हेट, बट रियली अगर ये सीरियस कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अब आ रहा है, सबके लिए तैयार हो रहा है, देन रियली दिस इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म दैट यू नीड टू हॉप इनटू, बिकॉज
आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो इतना आपको जो है मोमेंटम नहीं मिलने वाला है जितना टिकटॉक पे अब एक्चुअल मिलने वाला होगा. So let's see how it really translates into, and until then I'll be back with another podcast. And if you're listening to this podcast until now, then please subscribe to my YouTube channel as well. You can listen to this podcast series on Spotify as well, on Google podcast, on Breaker, and on the platform like Anchor as well. Until then, bye bye, and इंस्टॉल करके देखो और एक दो कंटेंट बना के देखो, एंड लेट्स सी हाउ इट इज़ एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब और सम अदर प्लेटफॉर्म, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन when you actually do it, and I'll share my content as well, and let's see how TikTok is really gaining momentum.